Ahead of the scheduled release on September 6, Kangana Ranaut's film Emergency is still stuck with the Film Certification Board. The actor has revealed that the certification of the film has been stopped due to the threats that have been received by her. Now, in a video released on social media, Kangana said that the film was cleared initially but faced hurdle in certification after censor board people started getting murder threats. कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me, and I'm very sorry for the state of things in this country. You heard the reaction from Kangana Ranaut. Now remember, Akali Dal in Punjab had sent a legal notice to the censor board demanding halt on the release of Kangana's film, claiming that it may incite communal tensions in Punjab and spread misinformation as well. Now the notice alleges that the movie portrays the Sikh community in an unjust and a negative light. Now several other organizations such as Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee in Punjab have also sought a ban on the release of the film, claiming that it spreads anti-Sikh narrative and represents Sikh as separatists. Now, other than that, Sikh groups in Telangana have now also waded in and they have sought a ban on Kangana Ranaut's film. Senior Congress leader and advisor to the Telangana Chief Minister Muhammad Ali Shabir met with the Sikh community delegation yesterday, and the delegation has demanded a ban on BJP MP Kangana Ranaut's upcoming movie Emergency. And after the meeting, the party leader also said that the Sikh community is seeking a ban on the film in the state, claiming that they will start protesting if their demands are not met. ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। कल मेरे पास सिख डेलीगेशन, मैंने समझा छोटा डेलीगेशन है, नहीं बल्कि सारे गुरुद्वारों के मुखिया लोग जितने हैं कोर के साथ मिलकर आए हैं। वो यही कहते हैं कि भाई अब जो नई मूवी बनी है कि उसका नाम है एमरजेंसी, उसके अंदर हम सिख बरादरी को उसके अंदर बेइज्जती की गई है। Well, you see, majorly these reactions are coming from the state of Punjab, and when asked about the fate of the film, popular Punjabi singer Pammi Bai, who's also the member of CBFC in Chandigarh office, said that if certain Sikh groups are objecting to the film, then they must be doing so based on certain scenes that they would have seen. Now, meanwhile, Aam Aadmi Party MP from Punjab's Barnala district has said that the state government in Punjab would consider banning the film if anyone's religious feelings are hurt. Listen in. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। अभी तो फिल्म हमारे पास आई नहीं, जब आएगी तो फिर बताएंगे। उससे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये धार्मिक जो सेंटिमेंट्स हैं उनको टच करती है, एक गलत पिक्चर दिखा रही है। वो देखिए जैसे उन्होंने किया है तो कुछ देखकर ही किया होगा, कुछ न कुछ तो उन्होंने देखा होगा उसमें, कुछ न कुछ सीन इस तरह के होंगे जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो जब हमारे पास आएगी तो हम देखेंगे। Robert Wada has also reacted to the controversy around Kangana Ranaut's film, but chose to launch a personal attack on the actor turned politician, saying that she's not fit to be a parliamentarian as she's not educated. देखिए, कंगना रनौत के लिए जो कम बोला जाए वो ठीक है, वो महिला है, मैं आदर करता हूं, पर मुझे लग रहा है उनकी जगह संसद में नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनको संसद में होने का कोई
मेरे तरीके से है कि वो लोगों के लिए कुछ सोचती नहीं है, खाली अपने लिए सोचती हैं, पर उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मेरी एक ही विनती है कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। My colleague Amandeep joins us live on the broadcast. Amandeep, Kangana Ranaut said that initially the movie was cleared for release, then its release was halted. Take us through what all these Sikh groups as well as the Aam Aadmi Party as well as Akalis are saying as far as this movie release is concerned. Well, certain organizations in Punjab, they are seeking ban on Kangana's emergency in Punjab just because, according to them, it is actually hurting the sentiments of Sikh religion by depicting a wrong picture. And in fact, in that camp, Shromani Gurdwara Prabandhak Committee has written a letter, Shromani Akali Dal political party has written a letter, Dal Khalsa has organized a protest, and in fact several other organizations also. And even Aam Aadmi Party government has not taken any kind of stand on this. And according to the Lok Sabha member of Parliament of Aam Aadmi Party from Sangarur, he said that they have not watched the movie so far, and in fact, if any sentiment is being hurt, then they will consider to ban it. That means so far the Aam Aadmi Party government has not took any decision regarding the screening of emergency in the state of Punjab. Simultaneously, when the question was asked to the board members who were from the Punjabi industry, they said, we have not seen this movie, we have not seen that scenes especially which were being objected by several Sikh organizations, but even they have not backed, even they have not ruled out, they are just trying to avoid getting into the situation. But on the other side, the political war of words is still continuing, and in fact, let's wait and watch. Either this movie is going to release as it's scheduled on 6th of September, or it get delayed, or it will be partially released in some states like the Punjab. If the Punjab, the controversy is all around in Punjab, either the Punjab is going to release this movie or not, and how these Sikh organizations and Shromani Akali Dal will react in case it will be released. Yes. So the movie was scheduled to be released on September 6th, but now Akalis have sent a legal notice. Aam Aadmi Party is saying that they will ban this movie. Ahead of the scheduled release on September 6th, Kangana Ranaut's film Emergency is still stuck with the Film Certification Board. The actor has revealed that the certification of the film has been stopped due to the threats that have been received by her. Now, in a video released on social media, Kangana said that the film was cleared initially but faced hurdle in certification after censor board people started getting murder threats. कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है. इट इज नॉट ट्रू. इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं. तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं. आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है. सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी, एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country.